Very good evening to all who are present here. It's my pleasure to be seated with these dignitaries in this room. I'll keep the language Hindi English so that most of our audience would relate to what we're talking about. We'll start with quick introductions. Dr. Saab, if you can just start with your introduction and then we'll cover all the panelists. First of all, I must thank the host for having invited us to talk to you, my friends. The future is of the country, and as rightly said by Sardarji, if the Indian economy has to go 5 trillion, SME is one of the biggest area which can take India to heights, and to meet what our worthy Prime Minister Narendra Modi's desire is, digitalize India. Only day before yesterday you must have seen that logistic also is digitalized, and may not be of my age, but your age, youngsters' age. Naturally the future is with youngsters, and for them to understand IT is a no problem. SMEs as such has yet to take up and go for it. There are two parts of India, south and north. So our south SMEs are concerned, they are much ahead of the North India SME sector. You must have seen that most of the South SMEs are ancillary industries. They are attached with 1 or 2 or 3 or 6 or 5 number of large-scale industries. And they have digitized themselves. They have joined very many companies like even Amazon and Flipkart and all this for their marketing. And for the manufacturers, how to get different parts at a competitive rates, that is also through that wire, which is all known as the internet. So gentlemen, I must congratulate that this is a good forum. Amazon, which the business development manager, Mr. Sardarji, was saying, cloud, he has very well explained, collection of data, input output like the GST, it is the same way. So far, as the moderator told me how to start, the beginning is, well, I am K.L. Jain. I am Honorary Secretary General elected of the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, which is the apex organization of industry, trade, commerce, exports. It is situated at MI Road. Those who are of Jaipurite, they know it very well. Well placed, with good rapport with all agencies, connected with industrial development, trade development, export development. Our Chief Minister recently, only yesterday, SME policy, handicraft policy, he has launched yesterday only. It has given many slopes, and the focus is on agro processing industry, IT. That way Rajasthan is also contributing in a big way so far SMEs are concerned. I started my career as a management trainee with a large-scale industry owned by late Mr. B.M. Birla, which is now known as National Engineering Industry. Earlier it was known as National Ball Bearing Factory. I had a training at Jaipur, I had a training with Hindustan Motors at Calcutta, then Oriental Agency at Hyderabad. I started with SME, with a Junjunwala group of industries. Today they are one of the biggest leading textile manufacturers, exporters. Then I joined Southgents as cement industry. But I started my career with SME in 1959 at Vice Godam
if the Jaipur people know it, the Bais Godam is a very well was the first industrial area which was called at the time of late Mr. Manu Bhai Shah, the then Minister for Industries in late Pandit Nehru's cabinet. He went to Japan to study how SMEs are developed. And then he gave a concept that SME means in Japan the model is different components are made by different units, and then one industry, he assembles the parts and then markets it. Like Suzuki in India, Maruti which is known, they have more than 10,000 ancillary SMEs attached to them. And this is how Maruti competes very well with other car manufacturers and very popular too. So gentlemen, I would very much advocate digitalize ourselves. The more we digitalize, the more we reap the harvest. We reap the benefit out of it. And be sure that if we have to compete and we have to remain in field, this is the only way we have to go. Whether it is marketing, whether it is branding, whether it is patenting, whether it is geographical indication, or whether cost cutting, whether meeting competitiveness, making competitive product. That is the way, this is how I look digitalization in India. Good. Thank you. Thank you so much, Dr. Sir. Dheeraj sir, if you could introduce. Good evening, everybody. Thanks a lot for calling me over here and sitting in the panel with august people over here. To introduce myself, I am Abhrujit De. I take care of IS in GNS Power. To talk a little bit about myself, I am one of those fortunate generations. I belong to that generation who has used third generation computer with punch cards. Now I am sitting in a panel discussion to discuss clouds with you guys. So that's why I feel extremely fortunate, and you can call me a dinosaur in a way because I am from that era basically. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much for joining us today. Nitish, if you could go next. Hi everyone. I'm Nitish Mugalia. I'm head of operations at My Team 11. My Team 11 is a gaming company based out of your very own Jaipur. I joined My Team 11 3 years ago. Before that, I worked in United States with a bank called Capital one of the biggest consumers of public cloud. So I think like the security questions that were being asked, like I think those are the questions that we had really deliberated upon. But yeah, it's been so much fun and very happy to be at this panel among the elitist of the elite of Jaipur. I think KL Jain ji के introduction के बाद थोड़ा follow up करना वैसे भी काफी मुश्किल है. So I'm just lucky that I'm sharing the same dais as the dignitaries. Thank you so much, Nitish, for being with us today. Ajit sir, if you could go next. Hi, good evening everyone. Yes. Hello. Good evening everyone. My name is Ajit and I'm the CTO of SK Finance. SK Finance is a finance company which is started from the Jaipur only. And presently we have agents in 8 states and 500 branches. So I would love to answer your questions if you have any specific question related the use of AWS in finance industry or the customer, how we are dealing with the customer. So I would love to answer your questions. Thank you very much. Thank you so much for joining us, sir, today. Sir. Good evening, everyone. I am Dheeraj Vijayvargiya, representing Priyam Infosystems Private Limited. और मेरा सफ़र भी कैरियर का सफ़र भी SMEs के साथ में रहा है. I have started my career in 1994 जब 1.44 KB की 640 KB की floppy drive आती थी. And I am happy to share a dais with Gurmukh ji and AWS and our मास्टर श्री KL जैन साहब आज इनके साथ डाई शेयर करने को मौका मिल रहा है. सो वी आर इनटू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और SMEs के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हम लोग डील करते हैं. टैली आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे. हम लोग टैली में डील करते हैं और स्मॉल मीडियम एंड वेरी लार्ज कस्टमर्स आर यूजिंग टैली और उसमें हम लोग कस्टमाइजेशन भी करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस अपने बिल्ड करते हैं. क्लाउड सॉल्यूशन पे हम लोग काम करते हैं. Thank you so much for joining us today. Gurmukh here needs no introduction, but still.
Yeah, I'll not introduce myself again, but really, really happy to. Special thanks to Mr. Jain for your time, sir. Really appreciate it, and to all the esteemed panelists. And I shamelessly stole everything which they told me and narrated to you guys. But look forward to our interaction, and also if you can get a little more light to the audience, if it's possible, so that we can get some answers from. We are able to answer any questions you have. But I'll let Himanshu. Sure. Thank you so much. And I'm Himanshu. I'm the regional manager for AWS, and I would like to kickstart this discussion. Right, I'm very fortunate to be here with all of you. जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है. आपने ये SMEs को बहुत करीब से देखा है, काफ़ी टाइम से आप इन SMEs के साथ एसोसिएटेड हैं. आप हमारे ऑडियंस के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए कि SMEs को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करने में क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं, और आपका चैप्टर क्या प्लान रखता है इस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बढ़ाने में इन SMEs के लिए. देखिए, जहाँ तक राजस्थान में SMEs का वैसे तो संख्या करीब 6 लाख के आसपास है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें करीब 40%, मैं कहूँगा 50% से भी अधिक माइक्रो लेवल है, जिसे हम आर्टिजन्स कहते हैं. और आर्टिजन्स में अभी भी शिक्षा का कमी है. IT तो समझने की बहुत बड़ी दूर की बात है. वो बेचारे बैंक क्या होता है, बैंक से फाइनेंस कैसे लिया जाता है, उसको भी शायद ज्ञान उनको नहीं है. अब धीरे धीरे राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, उसमें अब उन्होंने IT से रिलेटेड पर्सोनेल को जॉब देना शुरू किया, उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया है. और बैंक्स ने भी उनके ब्रांच मैनेजर्स को बजाय कमरों में बैठने के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के साथ मिलकर क्लस्टर्स में जाना करके उनके प्रपोजल्स बना के उनको फाइनेंस करने की गाइडेंस दी. इसी प्रकार डिजिटलाइजेशन की बहुत सी कंपनियां उनके साथ जुड़ रही हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में, जैसे फ्लिपकार्ट है, आपका अमेजोन है, अन्य. धीरे 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 इस ओर उनका प्रसार बढ़ रहा है. और आज आपको एक फिगर बताता हूँ. हम 2019-20 में राजस्थान से जो निर्यात होता था वो 359 करोड़ रुपए का निर्यात था. आज वो निर्यात बढ़कर 75,000 करोड़ का राजस्थान ने यात्रा की है. और इसमें भागीदारी जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, हमारा रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है, हमारा डायमेंशनल स्टोन का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इन सब का मिलाजुला प्रयास है. उसमें भी 48% की भागीदारी SMEs की. और आने वाला फ्यूचर राजस्थान का करीब 1 लाख करोड़ का. इसलिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना अभी राजस्थान सरकार ने की है. एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एपरल प्रमोशन काउंसिल है, स्टोन डायमंड से स्टोन की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है. इस प्रकार धीरे धीरे राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर है. मैं उस वक्त को भी जानता हूँ जब राजस्थान के एंटरप्रेन्योर दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन राजस्थान अछूता था, उनके इन्वेस्टमेंट नहीं था. आज राजस्थान में मेरा मानना है करीब 30 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट. और अगर लेबर फ्रंट पे एम्प्लॉयमेंट देने वाले सब बात करें तो राजस्थान में SME सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्थिति में है. तो इसलिए SMEs का और ख़ासकर जो फोकस हमारे यहाँ है वो है एग्रो. चूँकि हम एग्रीकल्चर, आज भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रधान है, लेकिन जोत कम हो रही है. जोत के कम से मेरा मतलब एरिया ऑफ कल्टीवेशन, वो जोत कम हो रही है बिकॉज ऑफ सक्सेशन इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है. एक दादा के 4 लड़के, उनके फिर लड़के, उनके लड़के, तो जोत धीरे धीरे घट गई है. तो अभी राज्य सरकार ने इतना तक किया है कि रूरल एरिया में 10 एकड़ तक भी आपकी ज़मीन में आप एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो कन्वर्जन चार्जेस से उसको कंप्लीट मुक्ति मिलेगी. इस प्रकार जो डिफरेंट हमारे यहाँ है.
राजस्थान चैम्बर ऑफ फेडरेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, हमारा इस दिशा में पूरा प्रोग्राम है। हम अब तक अवेयरनेस के कितने ही प्रोग्राम करा चुके हैं। आईटी कंपनी से उनका इंटरफेस कराते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर उनसे कहते हैं वो उनकी मदद करें, फैसिलिटेशन करें, और उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि 2025-26 तक राजस्थान के SMEs करीब 75% तक डिजिटलाइज हो जाएगी, ऐसा हमारा मुख्य उद्देश्य है। करीब करीब राजस्थान चैम्बर फेडरेशन स्मॉल के लिए नहीं, मेरे साथी 40 वाले बैठे हैं, फिक्की भी है, फिक्की का रीजनल ऑफिस भी है, CIA का भी रीजनल ऑफिस है, SOCHM का भी रीजनल ऑफिस है, और हम सबका मिलाजुला एक प्रोग्राम इसी दिशा के अंदर है। और हम वक्त आने पर सरदारी से मदद लेंगे, आपको भी बुलाएंगे। आपकी कंपनी के जो और IT एक्सपर्ट्स हैं, अभी तो राजस्थान चैम्बर में हमने एडवर्टाइज किया है एक IT एक्सपर्ट की जगह के लिए, और हमारा ये प्रयास है कि राजस्थान भी निकट भविष्य के अंदर, आज जो हम करीब 9वीं-10वीं पायदान में हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हमारी जो नीतियाँ राज्य सरकार की बनी है और भारत सरकार की बहुत सी नीतियाँ, रिजर्व बैंक ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई हुई है फाइनेंस को देखने के लिए, और उसका भी रिजर्व बैंक के बैंकों के साथ पूरा फोकस इस बात का है कि आप डिजिटलाइज करिए, लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन लीजिए, उनका ट्रैकिंग सिस्टम ऑनलाइन करिए, उनका जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो आप ऑनलाइन भेजिए, ऑनलाइन उनको उत्तर दीजिए, इंटरफेस पर्सनल बहुत कम करिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा भविष्य सुनहरा है। और आपने तो नाम भी अच्छा रखा, क्लाउड के साथ यात्रा, और मैं ऐसा होता हूँ यात्रा सफल होगी। और जैसा इनका स्लोगन है, SME का फ्यूचर ही क्लाउड है, SME का फ्यूचर डिजिटलाइजेशन है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और आशा और मैं विश्वास करता हूँ हम सबका मिला जुला प्रयास। आप इन लोगों ने भी आज मार्केटिंग के लिए नहीं किया, ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने किया। मैं आपका साधुवाद देता हूँ, आपको, आपकी कंपनी को, कि आपने अच्छा प्रोग्राम किया है। कमाना तो देखिए हर एक को है, क्लाउड में हम डाटा इकट्ठे करते हैं, इनपुट आउटपुट की तरह से काम करते हैं, लेकिन आपने एक जागृति का एक सिस्टम किया है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि राजस्थान निकट भविष्य में 6ठी 7वीं 4थी 5वीं पायदान पे औद्योगिक दृष्टि से पावर सेक्टर हमारे यहाँ कम था। एक स्थिति थी कि जिस वक्त राजस्थान बना केवल 13 मेगावाट पावर राजस्थान में थी, राजाओं के महलों में या रईसों की कोठियों में। आज राजस्थान के अंदर करीब 30,000 मेगावाट की क्षमता पावर की है, तो उसमें 22,000 मेगावाट तो हम अपना जनरेशन करते हैं, बाकी सोलर पावर है, विंड पावर है। सोलर पावर का तो राजस्थान हब बनने वाला, इसका आशा की जाती है करीब 40,000 मेगावाट की क्षमता राजस्थान में है। और इसी तरह से सोलर पॉलिसी राजस्थान की है, रूफटॉप के ऊपर पहले सब्सिडी मिलती थी, अब संभावना है वो सब्सिडी पुनः चालू होगी। और मैं समझता हूँ हर घर के ऊपर सूरज की बिजली चमकेगी, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी डिजिटलाइजेशन एक आवश्यक चीज़ है। इसमें कोई पर्यावरण को नुकसान देने वाली बात है, एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है। और जितना ज़्यादा जल्दी होगा, आज भी भारत दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे विसर्जन कहते हैं, उस विसर्जन की दृष्टि से भी हमारी परसेंटेज दुनिया की अन्य देशों के मुकाबले में कम है। और इस सब के लिए भागीदार हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो नए नए विचार रखते हैं। आईटी में जितना गजब, जितना राजस्थान हिंदुस्तान को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो लेके उन्होंने चली है। आज हमने, आपने पढ़ा, सबने पढ़ा होगा, जलपोत सबसे बड़ा जो चीन को टक्कर दे सकता है, पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है, ऐसा समुद्री बेड़ा उन्होंने तैयार किया। हवाई जहाज का भी तेजस जो हमारा है, वो अपने आप में कॉम्पीट करता है अच्छे से अच्छे देशों के आगमकारी मदद। ये सब कैसे है? ये सब आईटी का कमाल, ये आईटी के कारण से।
और नए नए टेक्नोलॉजी जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा। इंटरफेस पर्सनल बिल्कुल कम होने वाला है, और मुझे तो अब कितने दिन जीऊँगा ये तो कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि मैं देखूँगा तब तक प्रभु मुझे जिंदा रखेगा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की जो कल्पना है वो बन के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, मैंने ऑर्गेनाइजर से निवेदन किया था, मेरी होम मिनिस्टर के तबीयत नासाज है, अब वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सकता था, मैं हाजिर हुआ हूँ। आपने इन सब देवी देवताओं से दर्शन करने का मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि जैन साहब बात कर रहे थे एसएमई चैप्टर्स की, उसी तरह से आपने भी इन एसएमईज के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है इन टर्म्स ऑफ उनको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने में। आपने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है कि किस तरह के ट्रांजिशंस ये एसएमई कस्टमर्स गुजरे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या ट्रांजिशंस और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं जो आपने इस इंडस्ट्री में एसएमई ऑर्गेनाइजेशंस में देखे हैं, एंड क्लाउड का आप क्या रोल इसमें देखते हैं? So we are in a very very interesting and very exciting age as of now. We think about 21, 22, 23, 24, 25 as a year, because the SMEs businesses started happening, growing from the 90s and 95 and 2000. Now the next generation businesses, next generation in the business are coming nowadays. So that transformation I am seeing greatly in the businesses, कि उनकी नई जनरेशन भी अब बिजनेस में आने लगी है, तो दे आर वेरी टेक सेवी। और एज फार एज हम एसएमईज की बात करें तो उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है अभी तक काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी इन्वायरमेंट उनको उस तरह का मिला नहीं कि ऑटोमेशन के लिए राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर। बट पिछले 5-7 साल 8-10 साल की हम लोग बात करें, स्पेशली आफ्टर कमिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेसेस में हो रहे हैं। बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वो यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेसेस को स्केल कर रहे हैं, मल्टी ब्रांचेस लेवल पे जा रहे हैं। तो क्लाउड को पिछले अगर मैं 3 साल की बात करूं तो इट हैज़ गॉट ए वेरी बिग जंप एज फार एज द अडॉप्शन ऑफ क्लाउड इन एसएमई सेगमेंट। और AWS का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज अभी जैसे एक हमारे फ्रेंड एक पूछ रहे थे, तो मैं दोस्तों 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा क्लाउड का, थोड़ा मारवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी तरीके से। कि एक तरीका होता है कि हम अपना खुद का घर खरीदते हैं और एक हम रेंट पे रहते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, लेकिन अगर आप रेंट पे कहीं पे लेते हैं तो आपकी चॉइस होती है कि आप वहाँ पे कितना टाइम रहना चाहते हैं। आपको नहीं पसंद आता तो आप स्विच कर सकते हैं, आप उससे बड़ी और बेटर लोकेशन पे जा सकते हैं। तो क्लाउड का ये एक टेक्निकल एडवांटेज है। एक बार अगर आपने कोई घर खरीद लिया या इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपने आपके यहाँ पे खुद के यहाँ पे बनाया है, तो उसकी लाइफ 3 या 4 साल होती है। तो अगर आप उसका ROI देखेंगे, अगर आप उसका रिटर्न देखेंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है नेट। जैसे गुरमुख ने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेसेस के अंदर, वो किस तरीके से आपको हेल्पफुल करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप स्केल अप करना चाहते हैं, लेट्स से आई एम स्टेइंग इन 4 बेडरूम फ्लैट, राइट, अगर मुझे ऑल ऑफ सडन 6 की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, राइट। वेयर एज अगर मैं रेंटल में रह रहा हूँ तो मेरे लिए वो ऑप्शन बहुत आसान होता है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, एक हमारे फ्रेंड ने बात की थी डेटा सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो हम हमारे घर में कितना स्ट्रॉन्ग लॉकर बना सकते हैं, राइट। हमारे घर में अगर वैल्यूएबल्स को रखने के लिए हम कितना स्ट्रॉन्ग लॉकर बना सकते हैं, और एक वही लॉकर आपके बैंक में होता है। तो देयर इज़ ए ह्यूज ऑफ ए डिफरेंस कि एक जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मैं मेरे यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ और एक मेरे को मेरे बैंक में मिलता है। तो डेटा सेंटर्स भी इसलिए ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं बिकॉज ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हैं, राइट, और सारी कॉम्प्लाइंसेस को मैनेज करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ों को करके ही डेटा सेंटर्स बनते हैं, राइट। वो हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक लेवल के बाद में सैचुरेशन आ ही जाता है, या फिर उसको करने के लिए बहुत हमको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो द ट्रेंड इज लास्ट 3 years इफ वी टॉक अबाउट इज मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स क्लाउड, और लोगों को उसका एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि आप जब स्केल डाउन करना चाहते हैं,
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप स्केल अप करना चाहते हैं और किसी भी स्केल तक जाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. एंड एज फार एज 40 इज़ कंसर्न, आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 40 एज ए चेयरपर्सन IT. हम लोग हमारे एसोसिएशन और एसोसिएशन मेंबर्स के लिए बीच बीच में IT के प्रोग्राम्स हम लोग प्लान करते रहते हैं. हम लोग जब अभी जैसे GST के टाइम पे हमने ऑटोमेशन के लिए काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम किए, सो दैट हम लोग लोगों को, बिजनेसेस को इनेबल कर सकें कि वो कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं सिस्टम. बिकॉज GST आने के बाद में, और अब जैसे ई इनवॉइसिंग अभी आप देख रहे हैं, पहले 500 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, 20 करोड़, नाउ 10 CR. एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि 1 जनवरी से शायद 5 करोड़ पे ई इनवॉइसिंग. तो ई इनवॉइसिंग जैसी चीज़ें भी बिना ऑटोमेशन के, अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर कोई सोल्यूशन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो सोल्यूशन आपको ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो इट इज़ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बिजनेसेस को वो अब समझ में आने लग गया कि ऑटोमेशन कितना ज़रूरी है. और जैसे जैसे आप जब हैवी इन्वेस्टमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, देन यू आर रियलाइजिंग कि आपके लिए क्लाउड इज़ ए मच बेटर एंड चीपर सोल्यूशन. एंड आई थिंक AWS इज डूइंग ग्रेट, और इनके ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं आपके पास में. एंड कंपैरेटिवली, जैसे एक फ्रेंड बता रहे थे, 3-4 से कंपैरिजन बता रहे थे, तो सिंस हम लोग भी AWS को यूज़ करते हैं, एंड आई थिंक दिस वेरी कॉम्पिटिटिव. थैंक यू सो मच धीरज जी. हम लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी. गुरमुख ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कैसे हर बिजनेस आज एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है और एंड कस्टमर भी अब डिजिटल हो गया है. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी इंडस्ट्री में किस तरह के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स आज देखने को मिल रहे हैं या जो आप ड्राइव कर रहे हैं, और उन डिजिटल इनिशिएटिव्स में आप क्लाउड की क्या भूमिका देखते हैं? Thank you very much. First of all, I would like to take your pardon that मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, so I'll not try to answer in Hindi. So you have to pardon me. The point is, digitalization is in. We cannot deny that. And digitalization is nothing to do with IT. First of all, I would like to break the myth. Digitalization is all about transformation of business. The way you are doing business today, you are transforming it to benefit of the business and changing the processes so that, and technology is incidental. Matlab, oh, hey, you have to use it, there is no other go. So I would like to take this question in 3 parts. One is how the organization, as an organization, Genus is taking up digitalization for internal consumption. Sure. Like, we have been using ERP for quite some time. But ERP is a transactional system and the reach was limited. It's always like that. Like, SAP or any other ERP is expensive. The reach is limited. So naturally, there are a lot of manual intervention takes place. Today, we have taken up certain business areas like Salesforce automation, process TAT monitoring, that like turnaround time monitoring. Like that, there are about 16 odd projects we have taken up. Including industrial automation as well for the cyber factory and other thing. Like, as you very rightly mentioned, that with this IIoT kind of thing and with cloud intervention, we are able to, we are nowadays, we are able to predict failure, the condition monitoring and other stuff. So we are all doing that. About 16 odd projects we have got in hand for doing. On the top of the card is, as I said, the Salesforce automation, because that's going to change the CX, the customer experience. That's the one part of digitalization. Second part is that we have got a very, you were telling about the investment on the data center. We are definitely at the crossroad because we have got SAP, and in and around SAP we have got 27 odd applications running now. So we need to pump them up. We are getting bottlenecks, so we are definitely looking forward for cloud as a digitalization platform. So that the very reason is that of late, because of the supply chain issues, building up your own infrastructure is just not the right thing to take up. So we have decided that as much as cloud we can go slowly. Few of them are lift and shift. Few of them हम लोग उसको convert करके वहाँ post करेंगे. That's the internal consumption part of it. But the majority part, the industry which we belong to, is that
energy measurement, basically. In that energy measurement industry, cloud is going to come at, rather it has come already in a very heavy way. Because the kind of data it is going to explode, no static infrastructure can manage today. So like, today all the cities are being converted into smart cities. In fact, Jaipur is one city where I believe all of you are using our meters now. All the smart meters are Genus Power smart meters. So they are pumping data every 15 minutes. So you can understand the quantity of data it is pumping, and those meters and those data are cash cows for the utility boards. So we cannot make any mistake on that, and we have to store them, we have to analyze them, we have to convert into revenue. So, and to do that, only solution is cloud. So that's the part of it. I should say like that. These are three parts. Third thing about the whole business, if you want to make sure that you have to maintain the business continuity. So if today our SAP system has got a tier in Haridwar, so that's an additional investment we made. Now if it is on cloud today, you are rest assured that your business continuity is maintained. And with what Gurmukh was telling about this, because of the pandemic thing, this awareness and the speed of conversion has definitely increased. So we should be, and my one last point I would like to add, SMEs should consider it very seriously, not to invest on on-prem cloud, on-prem infrastructure, unless and otherwise response time is the criteria. They should look for the cloud because of all the various reasons what Gurmukh has told. Thank you. Thank you so much, sir, for crisply sharing the answer in a multifold way. It was really insightful. Ajit, sir, my next question is to you. Financial services industry, if you look at whatever transformation has happened, it has begun with financial services at the core of all the transformation that has happened. In terms of, as Gurmukh mentioned, that the end customer is going digital. A lot of processes today in this industry are going digital. So, could you talk to us about, as an organization and this industry, what are the different business processes that you are seeing taking the digital route, and where do you see AWS Cloud role into those digital route? Okay, so I'll answer your question in two sections. First section is like SME is very important for SK Finance because we do loans to SMEs. So maybe there are so many potential customers sitting out there. Okay, so if you need SME loans, so we are. So just to answer the customer experience, if you ever been to Japan, अगर आप कभी जापान गए तो आप वहाँ के डिपार्टमेंट स्टोर में जाएंगे, if you want to buy a TV, तो टीवी आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे 10 फाइनेंसर बैठे होते हैं. On the TAT there is only one minute. अगर आपने 1 मिनट में उसका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया, तो नेक्स्ट के पास चला जाएगा. He will not wait for a second. और वो दूसरे के पास चला जाएगा, उसने 1 मिनट में उसको लोन सेक्शन कर दिया, तो टीवी उससे लेके वो चला जाएगा. In India, few companies are trying to do this process, the complete process, customer verification, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं within 10 minutes. बट वो अचीव अभी 1-2 कंपनी नहीं किया है और अभी वो 8 मिनट में. टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, इफ़ यू गो फॉर ए लोन, अभी तो क्या होता है, जाएंगे लोन के लिए, पेपर आएगा, घर में जाएगा, 4 दिन में वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको लोन प्रोसेस करते हैं. बट वट वी आर ट्राइंग टू डू एज ए कंपनी, ये चैलेंज हमारे पास काफ़ी टाइम से था, टू हाउ टू रिड्यूस दैट, राइट. कोई अब धनतेरस आता है, लोगों को गाड़ी लेनी है, तो उनको 2 मिनट में चाहिए या 2 घंटे में एप्लीकेशन प्रोसेस होके और डिस्बर्समेंट भी करना है, यानी कि जो डीलर है उसको पैसा भी ट्रांसफर करना है. तो वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, देन वी थॉट कि नहीं हो रहा है अपने सिस्टम्स. वी हैव वेरी ह्यूज इंफ्रा in terms of technology, we invested huge on everything, but the bustable capacity, that's not achievable if you have something in house, because busting, that is quite, means you cannot achieve. We have tried that, we have invested a lot on that. Then we moved our few core processes on
the cloud. So now we can process the same file in 10 minutes. If somebody wants a loan, come to us, within 10 minutes we'll deliver loan in your account. So that kind of technology, the platform, the cloud is giving to us. And second thing, I think there may be many IT manager or IT team वाले बैठे होंगे यहाँ पर, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे लोग होंगे, तो उनके लिए एक पर्सनल है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक सजेशन है मेरा, आप अभी तक IT को रन कर रहे हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट? IT रन करने से मतलब है आपने सर्वर लगाए हैं, इतने सारे चीज़ लगाए हैं, कभी आपका मेल नहीं चलता है, कभी आपका वेबसाइट नहीं चलता है, कभी स्पेस फुल हो जाता है, कभी हार्ड क्रैश होता है, तो आप दिन भर उसमें ही लगे रहते हैं. ये फायर फाइटिंग में वाई यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम? इंस्टेड ऑफ रनिंग द IT, फोकस ऑन मैनेजिंग द IT. मैनेजिंग द IT मीन्स आपके पास है ना वो सिर दर्द देने के लिए. देयर आर सो मेनी क्लाउड पार्टनर्स. तो हमारा तो ये थॉट होता है कि वी डोंट वांट टू रन द IT. आई डोंट वांट माय टीम टू वेस्ट हिज टाइम ऑन फिक्सिंग द प्रॉब्लम ऑफ सर्वर्स. व्हाई? बिकॉज माय 10 मिनट जो मैं उसको रन करने में लगाऊंगा, अगर मैं IT को मैनेज करने में लगाऊंगा, तो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव टू द कंपनी, आई कैन ऐड मोर वैल्यू टू द कंपनी, आई कैन गिव मोर बिजनेस टू द कंपनी. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू आर रनिंग द IT, प्लीज लीव दैट. अभी आप आटा अगर घर में रोटी खाते हैं तो आप पहले गेहूँ ला के धोते हैं, मम्मी सुखाती है, फिर आप लेके जाते हैं, पिसवा के लाते हैं, फिर मम्मी रोटी बनाती है. वो आप नहीं करते हैं. आप सिंपली जाते हैं, 10 किलो का बैग उठाते हैं और मम्मी घर में रोटी बनाती है, आप खा लेते हैं. द सेम वेज IT के लिए मेरा यही एडवाइस है, डू नॉट रन द IT. इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. देयर आर पार्टनर्स हु विल मैनेज इट फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. That's a very well summarized benefit of cloud with a very simple day-to-day example. So thank you so much for sharing that. Nitish sir, I'll come to you next. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि there is a very interesting story on how did you founded your company. It came out of a India-New Zealand match, if I'm not wrong. India-Australia. So what is that story, sir? So I think it was 2015 World Cup semi-final. India lost to Australia, and the World Cup was happening in Australia. तो उस टाइम तब तक स्पोर्ट्स के फैन थे. इनफैक्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस. इन 2008 IPL, which was the very first IPL season, I was a bartender at SMA Stadium. तो मैं तीसरे फ्लोर तक अपने कंधों पे बियर लेकर के और बर्फ़ के ड्रम पूरे दिन भर देता था कि शाम को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर्स के ऑटोग्राफ ले सकूँ. So from that moment onwards, like the fan for sports हमेशा से रहा. So the idea was we were watching the game and India lost very badly to Australia. और जो होता है ना कि दिल टूट जाता है. तो अब आप देखते हो कि हिंदुस्तान में हर एक आदमी क्रिकेटर है. वो सबको होता था, अरे यार कवर ड्राइव ऐसे मारना चाहिए था, बाहर निकल के मारता. इसमें रविंद्र जडेजा की जगह अश्विन को क्यों नहीं खिलाया. अभी पंत और कार्तिक के ऊपर डिबेट चल रहा है, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो हमने ये सोचा कि यार इसको एक फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं बनाते. And I think I was in the US at that time. तो US में तब तक फैंटेसी स्पोर्ट्स was a very popular concept. वहाँ हम लोग सीजन लॉन्ग फैंटेसी खेलते हैं NFL के ऊपर, NBA के ऊपर. तो we started thinking कि यार इसको यहाँ बना सकते हैं. And I think वहाँ से ये आइडिया आया और वहाँ से ये प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया. And I would also like to extend that to further as well. कि जब हमने बनाने की सोची तो हम में से कोई भी इंजीनियर नहीं है. हम ना तो आई एम अ कोडर. माय इनिशियल फॉर्मल ट्रेनिंग वाज इन मेन फ्रेम्स COBOL, बट आई एम नॉट अ प्रोग्रामर बाय एनी ट्रेड और एनीथिंग. ना ही मेरे को फाउंडर्स में से कोई कोडर था. तो हमने किसी और से बनवा लिया, उसने कहीं और होस्ट कर दिया. एंड अंटिल वी एक्चुअली स्टार्टेड reaching that scale was we started thinking about क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब करना पड़ेगा. इसको स्केल रेडी बनाना पड़ेगा. you're now getting millions and millions of consumer. आप उसको कैसे वो रियल टाइम एक्सपीरियंस दो, ताकि जो अभी अजीत जी बोल रहे थे कि you're not spending your time fire fighting. I think उन चीज़ों पे हमने 2019 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया. 2019 में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ था, which was I think our introduction to AWS cloud. एंड कुछ 19 अप्रैल की बात होगी और 7:30 बजे गेम चालू होता है. उससे जस्ट 15-20 मिनट पहले एप्लीकेशन वाज कम्प्लीटली डाउन एंड इट रिमेन डाउन फॉर अ गुड 45-ish मिनट्स. एंड हम वी टिपिकली वी लॉस्ट रफली अबाउट $3.5 million in the top line that day itself. And about 15,000-ish calls
mails, phone chats, and the phone didn't stop ringing for the next 3 hours. और email, social media, Twitter was flooded. कि क्या बकवास ऐप है, हमारा पैसा चोरी कर लिया, कैसा चल रहा है धंधा, मतलब पीएमओ तक को ट्वीट कर रहे हैं लोग, एंड वो तो खैर हिंदुस्तान में किसी बात पे कर ही देते हैं. तो all those things started happening, and we had absolutely no clue कि यार हुआ क्या, मतलब exactly what the problem is, right? And that's when we started thinking about कि यार चलो ये हो तो गया, we identified the reason, but कि फ्यूचर में ना हो ये कैसे करें, and that's when the mindset shifted कि यार ये सर्वर मैनेजमेंट, होस्टिंग, ये सब उन लोगों को करने देते हैं जिनका ही काम है, जिनको अच्छे से आता है. हमें धंधा चलाना आता है, हमें कंज्यूमर से बात करना आता है, हमें उनसे मार्केटिंग करनी आती है, हमें उनकी नब्ज पकड़ में आती है, हमें उन्हें गेम खिलाना आता है. लेट्स फोकस ऑन दैट पार्ट. उसमें इनोवेशन करते हैं, इसमें मगजमारी क्यों करनी है. आई थिंक दैट वाज द थॉट प्रोसेस विद व्हिच वी स्टार्टेड, and it has been going phenomenally well. We have done a lot of tremendous use cases. So I keep on chatting about these things, and I'm happy to chat offline as well. Like I'm based out of Jaipur. आप LinkedIn पे reach out कर सकते हैं. We have done since then. हमने अपना खुद का data lake बनाया. उसको data उसकी वजह से हम customers को within split seconds we are now able to know when the customer is leaving the page. कि हम उसको बता सकते हैं कि यार तू छोड़ के मत जा, तेरे को ये डिस्काउंट देता हूँ. One such example was at IPL times, like payment success rate typically go down like less than 60%. Typical digital payments की success rate होती है 80 to 90%. And fantasy sports platforms की वजह से, in fact NPCI से भी हमें डंडे पड़ते थे कि यार तुम्हारी वजह से पूरे हिंदुस्तान में 7:30 से लेकर के 8 बजे तक पेमेंट्स स्लो हो जाते हैं, UPI फेल होता है. तो and because क्योंकि पूरा इंडिया गेम खेल रहा है उस वक्त, तो 60% की सक्सेस रेट है. तो आर थॉट प्रोसेस वर्क किया, अगर एंट्री पॉइंट अगर किसी का 50 रुपये और उसके वॉलेट में 45 रुपये हैं, तो आई हैव टू बिजनेस डिसीजंस टू मेक. मैं या तो उसको 5 रुपये डालने के लिए पेमेंट गेटवे पे भेजूँ, या और उसमें मैं देखूं कि 60% तो जैसे ही मैं उसको बोलूँगा कि तेरे वॉलेट में पैसे कम है, तो 60% तो वहीं ड्रॉप हो जाएंगे, और उसके बाद 60% फेलियर रेट पे ड्रॉप हो जाएंगे. उसकी बजाय मैं वो नुकसान ना झेल करके मैं उसको 5 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट वहीं क्यों नहीं देता, बिकॉज दे आर माई लॉयल कस्टमर्स, दे विल कम बैक टू माई प्लेटफॉर्म अगेन. And I was able to make those split second decisions with which we were able to increase our conversion to paid customers from 30% to 57%. तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज आप नहीं कर पाओगे अगर यू आर नॉट थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू लीव द थिंग्स लाइक सर्वर मैनेजमेंट फॉर द एक्सपर्ट्स टू डू. क्योंकि डेवऑप्स के इंजीनियर वैसे भी जयपुर में नहीं मिलते हैं. ये मैं नहीं बताया था जी. DevOps के इंजीनियर जयपुर में वैसे भी नहीं मिलते हैं, तो फिर क्यों इसमें सरदर्दी पाल लिया. So I think with that, I know I sort of digressed from the entire point, but I think that was pretty much the crux of the story. You really talked about the scale of operations which your business faced, and then you also talked about how quickly can I reach to the consumer. मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आपने AWS क्लाउड पे अपने यूज़र्स के साथ एंगेज करने के लिए किस किस तरह के यूज़ केसेस आपने ट्राई किए या आप अभी अडॉप्ट कर रहे हैं. आपने डेटा लेक की बात करी, आप मॉडर्नाइजेशन भी आपने बीच में टच किया. तो ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही है एंड व्हाट आर यू बिल्डिंग ऑन AWS. I think one of the best advantages that you get with being on a public cloud platform is your rate of experimentation is very high. एंड द कॉस्ट ऑफ फेलियर बिकम्स वेरी लो. तो जो हम बात कर रहे थे कि सस्ता, अच्छा और फास्ट वाली, आई थिंक दैट हैपेंस वेरी रैपिडली. तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक टिपिकली इन एनी डिजिटल बिजनेस एसेंशियली यू डोंट लर्न अंटिल यू एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंटेशन की कॉस्ट बहुत हाई है. अगर यार मेरे को उसका रिजल्ट 15 दिन बाद मिलता है, बशर्ते 1 घंटे एक्सपेरिमेंट रन करके. Similarly, in a digital business, I can very well see कि यार एक मेरा single audience, single advertisement, how is this section of the audience reacting to, and how is this section of the audience reacting to, and within 15 minutes of taking that feature live, I'll start getting the data back, and I can make a split second decision कि यार यहाँ पे 15% की adoption rate है, वहाँ पे 5% की है, ये वाला पकड़ो और सबको रिलीज कर दो. Right, that gives you a very huge advantage on your competition, on any other business in the world, when your rate of experimentation goes higher. Similarly, आप generally traditional IT companies में देखेंगे तो typically your production release scenario is like 2 हफ्ते में एक बार हो गया, 3 हफ्ते में एक बार नया update आएगा, right? With having the ability on the flexible cloud and all the automations built into the system, आज के दिन ऐसा होता है कि इंजीनियर ने एक लाइन ऑफ कोड भी लिखा
that automatically gets fed into the CI/CD pipeline and वहाँ से वो जो रिव्यूअर है उसकी GitHub repository पे अपने आप नोटिफिकेशन जाएगा, वो देखेगा, अगर उसने रिव्यू कर दिया, आपके टेस्ट केसेस ऑलरेडी ऑटोमेटेड लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे चलेंगे एंड कोड विल बी डिप्लॉयड, आपको पता भी नहीं चलेगा। विद इन स्प्लिट सेकंड, दिन में 25-25 बार प्रोडक्शन रिलीज होती है हमारे यहाँ पे, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट आर योर कंज्यूमर्स लाइकिंग, कि ऐप का लुक एंड फील कैसा है, ऊपर कौन सा मैच दिखाना है, मेरे को नोटिफिकेशन की बार यहाँ रखनी है कि नहीं रखनी है। सो यू कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ स्मॉल डेटा पॉइंट्स एंड आइटरेट। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, सो लाइक वन सच एग्जांपल वी हैड फेस, लाइक बिफोर वी मूव टू द ऑन-प्रेम क्लाउड, बिफोर वी वर ऑन द ऑन-प्रेम क्लाउड, वी डिडंट इवन नो कि यार कितने पेनिट्रेशन अटैक्स एक दिन में हो रहे हैं हमारे ऊपर। फॉरगेट अबाउट आइडेंटिफाइंग और इवन रीचिंग, हमें ये नहीं पता कि हो कितने रहे। When we moved to the AWS cloud, we put a first layer of security with I think the WAF layer, and the WAF layer typically captures on an average 150,000 penetration attacks on a single day for us. तो मतलब 150 के अकाउंट से इस तरह की चीजें ऐसी क्रिएट हो रही है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी बॉटम लाइन को बेनिफिट हुआ कि यार मेरे पास में साइन अप अब्यूज कम हो गया, मेरे पास में बिकॉज वी रन दिस ऑफर कि आप साइन अप करोगे तो 100 रुपए मिलेंगे, तो मेरे पास में साइन अप अब्यूज कम हो गया, मल्टीपल आईपी डिवाइसेस से रिक्वेस्ट आनी कम हो गई, एंड ऑल दिस विद जस्ट सिंपली इम्प्लीमेंटिंग ए सोल्यूशन व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर मैं उसको खुद बनाने जाता उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। other things that we are trying to build on in terms of जैसे मैंने बताया आपको customer surprise and delight, essentially if you are a fan of a particular sport, then I send you specific offers to that particular sport, if you're or like sort of show you only tournaments that you're interested in rather than just bombarding you with all the other information, so a lot of customizations can be built into the product. एक बहुत बड़ा मिसनोमर भी मैं ब्रेक करूंगा, लाइक आई थिंक एवरीबडी थॉट कि यार जब कोविड आया तो गेमिंग कंपनियों के तो बहुत ही मजे हो गए, उन्होंने तो बहुत पैसे छापे, क्या वैल्यूएशन बनी और क्या वो बना। फॉर अ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म वाज लाइक अस, दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बिकॉज हम वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन रियल स्पोर्ट्स टू हैपन, एंड फॉर गुड 6-7 months देयर वर नो स्पोर्ट्स। तो हमारे लिए तो बिजनेस ही वाइप आउट हो गया, लाइक फ्रॉम सडनली लाइक having 100,000 requests per second, we were almost having 0 requests on the platform, and we had no clue कि यार इसको solve कैसे करें। So हमने उस टाइम ये सोचा कि यार सबसे easy जो तरीका समझ में आता है, कौन बनेगा करोड़पति, बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है, चलता है हिंदुस्तान में, सब लोग खेलते हैं, उसका एक छोटा क्विज वर्जन, फास्ट फॉरवर्ड क्विज वर्जन, 5 minute, and you can simply play that, and that let's bring that to the platform, and that helped us survive for 6 months, and we were able to, from ideation to design to market launching, we were able to do that in less than 2 weeks. And that was the power of the superpower of the cloud, and obviously cost optimization. Here I don't have to pay for the top of the line servers. मेरे को उनको 2-2 महीने पहले एडवांस में बुक करके नहीं रखना, टू प्रेडिक्ट कि मेरा कब अपटिक आएगा, कब डाउन टाइम आएगा। यू सडनली नेवर नो कब आपका कोई क्रिएटिव वायरल हो जाए और सडनली यू हैव द ट्रैफिक एंड यू आर नॉट देयर टू कैच इट। Say for example, सब लोग ये कहते हैं कि I think that's one story, and I recall that demonetization जब हुआ था तो सबने बोला कि यार पेटीएम की चांदी हो गई, पेटीएम की चांदी हो गई, demonetization हो गया, अखबार में ऐड आ रहा है, but पेटीएम was there 7-8 years before that and ready to grab that opportunity, and I think that is where the power has to be, कि आपको वो मेहनत जो है उस ट्रैफिक को लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए पहले से करनी पड़ेगी। क्लाउड essentially helps to do that, regardless कि वो AWS का है, Google का है, Azure का है, as long as it works for your solution, I think that's what you should go for. Thank you so much, नीतीश, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्लाउड पे सिक्योरिटी ग्राउंड्स अप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं जो आप इनहेरिट कर सकते हो, which saves your time, and at the same time your environment is also compliant, right, which is one of the reason people use technology. So yeah, I have a question for you. So तो गुरमुख, हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली, हमने ये एस्टैब्लिश किया कि आज टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली थिंग विच कैन हेल्प कस्टमर्स उनकी क्वालिटी, प्रोसेसेस और इनोवेशन अचीव करने के लिए। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वेयर डू वी स्टार्ट, राइट? आज कस्टमर्स के पास हमारे क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं, स्पेशली AWS. You briefly touched upon some training programs. So, could you talk to us about what are the different programs available today with AWS जो हमारे customers leverage कर सकते हैं? Great question, and thank you, Himanshu, for asking.
So the way we think about it is from 3 dimensions. Okay. So one is I always recommend start small. You don't have to boil the ocean here. Right? Look at something as simple as digitizing your HR system as an example. Think about it. As an entrepreneur, how many hours in a month you spend just running a payroll? Average, if you go back, look at the time you take to collect the attendance, then make the salaries, then send that document to the bank for the salaries to be processed, send the challan to PF department with the money, with the funds, distribute that challan, cut the TDS, deposit TDS. Typically, a small business would spend anywhere between 7 to 8 hours a month just running payroll, right? What if I was to tell you that today you can automate your entire HR management system at 20 rupees per employee per month? That will make your payroll just by click of a button. Interested? So what we do is we've created what is called a digital suite. Now digital suite is a set of 25 applications which deal with HR, CRM, digital marketing, ERP, customer acquisition, all of that. And we put that on Amazon.in. So if you go to Amazon.in and you look at digital suite, they are curated set of applications. And our ISV partners, which is independent software vendors, who have built those solutions on top of AWS platform, are giving up to 75% discount to you to go and take that particular solution and start working. You can start with 1 license and scale up. That's on the application side. On the infrastructure side, which is instead of you buying a server or data or putting your own data center, you want to host on AWS cloud, we have what is called as Sambhav bundles. There are 5 use cases. You want to host your website, you want to store your data, you want to run certain data analytics online. So there's 5 such bundles which we call as Sambhav bundles, SMB bundles, SMB, HAB, Sambhav bundles. Again, available on A.N, available on AWS. All you need is a credit card to start, and if you talk to the sales people, then you will get you free for a month or 2. So take advantage of that, right? You can get started by looking at certain infrastructure which you can put on AWS. And the third dimension is, as Sir rightly said, don't do IT. Manage IT as any other asset you have, right? So third piece is capability, training. Now, you don't have to become a cloud architect to manage cloud. That's not required. But you might need to know what cloud can do. What I was trying to do in the first 40 minutes, which is trying to explain to you in an easy language what cloud can do for you. So we have created what is called as SME Vidyalaya. SME Vidyalaya is a set of courses for you as business owners and decision makers. Right? There are 4 courses online, it will go to 50. All of them are free. Please take those courses to understand how you can use technology for innovation, for speed, for scale, for keeping your costs down. And then for your team members, for people who are taking care of technology in your team, we have training and certification division. They are present in the booth outside, and they've come up with really low cost training program where technically you can empower your people to really understand the nuances of cloud, the technical capabilities, because technology to hai na, use to karna. So one is the application side of it, but one is the core technology side of it. So we are enabling you to take advantage of PNC capabilities to build those competence within your organization so that you can manage cloud. So in summary, applications always start with, because it's all about applications. That how do you digitize? You digitize one process at a time. Sir is digitizing 16 processes simultaneously. He's a superman. But let's start with one at a time, right? Look at 1, 2, 3, 4, scale that up. But once you scale it up, you've got to get your infrastructure in place. Start small. Get your website on AWS. Get your storage on AWS. Imagine, when lockdown hua, you could access your server, right? Your data was lying there, right? You could access it.
कैसे आप access करते हैं? आप घर से भी निकल सकते हैं. So now that data is available on cloud. It's available on your mobile phone. You can access it through your phone, right? So start there. And then third piece is get yourself educated on cloud, which is business use cases using SME Vidyalaya. Get your teams trained on technology through our training and certifications. If you look at these three dimensions, we're trying to solve it for you so that you're able to start and grow in this journey and take advantage. Because fundamentally, we want you to focus on what you are good at, bring new products, do innovation, serve your customers better. Thank you so much, Gurmukh.